Hello students, today we will discuss light chapter keywords. Number 1. Reflection of light. The phenomena in which light rays strike a surface and bounce back into the same medium. Number 2. Laws of reflection. So there are two laws of reflection. The first one is the angle of incidence equals the angle of reflection. Number 2. The incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Number 3. Plane mirror. A flat polished surface that reflects light to form a virtual, upright and same size image as object. Number 4. Image formation. The process by which mirrors or lenses produce images of objects which may be real or virtual, magnified or diminished, upright or inverted. Number 5. Refraction of light. The bending of light rays when they pass from one medium to another due to a change in speed. Laws of refraction. The incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of media, that is also called Snell's law. 7th point, refractive index, a measure of how much light bends when entering a medium, defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. 8th point, Snell's law, a law that relates the angle of incidence and angle of refraction, where I is angle of incidence and R is angle of refraction, and N is the constant that is called refractive index. Next is total internal reflection, that is TIR, a phenomena where light ray traveling from a denser medium to a rarer medium is completely reflected back into the denser medium when the angle of incidence exceeds the critical angle. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाता है एंगल, ठीक है। और इस एंगल को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो उस केस में आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो डेंसर मीडियम के अंदर ही कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एंड दैट फिनोमेना इज़ कॉल्ड TIR, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।